Assalamu alaikum dear students. This is our second lecture regarding the cognitive domain. थोड़ा सा मैं रिकेप कर लूँ कि प्रीवियस में लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था. So from the very start we discussed about what is the learning objective, which was our initial objective हमारा था कि हम इसको डिफाइन करें. उसकी definition हमने की, उसी कुछ characteristic हमने बयान की, and after that we define the taxonomy. We talk about the history of the Bloom taxonomy of the cognitive domain जो उन्होंने पेश किया था, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने बयान की. फिर ये तीन डोमेन जो है cognitive, psychomotor, affective domain, उसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया था कि what we mean from the affective, psychomotor and cognitive domain. Then we discuss these 6 subdomains of the cognitive domain, or which was the old version. Then we compare the old with the new version and discuss also the changes which were between this old and new version. After that, then we discuss in detail about the different level of learning in the cognitive domain, along with giving the examples of action verb to each level, as well as then we took the example of the apple and taking the example of the nutritional benefits of the health benefits of the apple. That was the topic, and then we discuss and demonstrate some examples related to this topic, along with each and every sub-level or the subdomain of the cognitive domain in the Bloom taxonomy. So the level 1, which was the remembering, then there was understanding, then that was applying, then analyzing, evaluating, and the last it was the creating. So the next, which is our today lecture, this is all about, we will discuss and will enlist some questions, as well as we will enlist some activities related and to the each and every level of the cognitive domain. So पहला जो remembering है, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप अपने स्टूडेंट से कर सकते हैं, और यूजुअली ये क्वेश्चन जो हैं ये आप हर एक लेक्चर के स्टार्ट में उनसे कर सकते हैं, और ये एक इफेक्टिव वे है कि इससे तो पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी क्या जानते हैं इस टॉपिक के बारे में. सेकेंडली जो है इसका फायदा ये भी है तो थोड़ी सी आप स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन करोगे अपने लेक्चर में. एंड तीसरी बात इसकी ये है कि थोड़ा सा एक कनेक्शन बन जाएगा कि जो आज थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा एक कनेक्शन बन जाएगा विद द प्रीवियस वन. तो इसलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आप हर अपने लेसन में कर सकते हैं, लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टर, हाउ मेनी, हु वाज एट दैट, कैन यू नेम द, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, हु स्पोक टू, कैन यू टेल व्हाई, फाइंड द मीनिंग ऑफ what is, and which is true or false. Specifically the last 4 options, can we tell why, और ये आप उनसे पूछ सकते हैं और भी आप उसको आंसर सुने, यानी उसको आप जज ना करें डायरेक्ट यस यू आर राइट यू आर रॉन्ग. आप सबके आंसर सुने और फिर उनसे कहें कि नाउ अब आप लेक्चर को देखिए और फिर आप खुद जो है जज करें अपने आप को कि आपका क्वेश्चन जो है गलत था या ठीक था. तो इससे क्या होगा, उसमें एक क्यूरियोसिटी में बढ़ जाएगी कि मैंने जो ऑप्शन दिया था स्टूडेंट थिंक दैट मेरा क्वेश्चन का जो मैंने आंसर देख किया वो गलत होगा या ठीक होगा, और तो फिर वो थोड़ा सा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो जो होगी टुवर्ड्स दैट लेक्चर. सो फाइंड द मीनिंग ऑफ, आप कोई भी टॉपिक पर जैसे स्टार्ट पे हमने डिस्कस किया taxonomy यानी ब्लूम taxonomy. So what is taxonomy? That may be the question you can ask from the student, and that question may be voluntary, यानी you आप जो है इस तरह मतलब नहीं करना चाहिए कि आप पॉइंट आउट करिए या बाय नेम किसी से पूछे. इसमें यूजुअली ये होता है कि अक्सर किसी स्टूडेंट्स को आंसर नहीं आता और आप उसको बाय नेम इस तरह उठा देते हैं या पॉइंट करके उसको उठा लेते हैं, तो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील होती है दूसरी क्लास के सामने. एंड अक्सर ऐसे टीचर की क्लास में स्टूडेंट्स पे कतराते हैं कि वो एक्चुअली उस क्लास पे नहीं जाते क्योंकि वो कहते, तो इट मीन
when you are asking these sort of question, you have to be very general, और आप voluntarily जो है कह सकते हैं. then जिन जिनको पता होते हैं जो hand raise करते हैं कि yes we know the answer, किसी भी जो है कॉर्नर से रैंडमली आप उनसे कहें, तो इससे ये होगा कि उसमें वो चीज बनी जिनको नहीं आता आंसर, दे विल वो मुश बैठेंगे, जिनको आंसर है उनसे आप किसी से भी उसे कर सकते हैं. देन व्हाट इज एंड विच इज ट्रू और फॉल्स, और फिर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है फिर यू विल एक्सपेक्ट दैट ये जो आंसर्स है, स्पेशली किसी ने ठीक दिया होगा किसी ने गलत आंसर दिया होगा, you will expect at the end of the lecture that answer to these questions they should be right from each and every student. तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं that will be the level 1, which is the remembering, between the memorization of the pre-existing knowledge. कुछ एक्टिविटीज जो आप कर सकते हैं, और इससे आप ऑब्जेक्टिव इस तरह बना सकते हैं कि at the end of this lecture the student will be able to make a list of the main events, student will be able to make a timeline of events, student will be able to make a fact chart, students will be able to write a list of any pieces of information you can remember and list all the dash in the story, article, reading piece, make a chart showing. तो ये कुछ इस तरह की वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, यानी उसको अगर पहले से आंसर उसके है जहन में और डायरेक्टली आंसर देगा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंप्रहेंशन ऑफ दिस डेफिनेशन, देयर इज नो नीड ऑफ elaborated explanation of these terms, and they will just do in a very simple way. They are very straightforward activities. थोड़ी सी फिर कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी और थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, यानी पहले से जो वो जानते थे उसको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह के क्वेश्चन एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट से कर सकते हैं एट द लेवल 2 ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन. कैन यू राइट इन योर ओन वर्ड्स. अब एक उन्होंने रट्टअप किसी प्रीवियस के लगाए थे और फिर आप उनसे कहें कि आप इसी पॉइंट जो आपने एक्सप्लेन किया, आपने पूरा कहानी बताई, इस कहानी को क्या आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं. कैन यू राइट ए ब्रीफ आउटलाइन, कैन व्हाट डू यू थिंक could have learned could have happened next, what do you think, what was the main idea, who was the key character, can you distinguish between, what difference exists between, can you provide an example of what you mean, can you provide a definition for. तो इस तरह की जो है डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं आप जो है कर सकते हैं फ्रॉम योर स्टूडेंट, एंड दे विल बी एट द level 2 in which there is the elaboration and explanation and detail of comprehension of what they have said, what they have told. Activities, sample activities at the level 2, at the subdomain of understanding, there would be like you can adult your students to do to illustrate what you think the main idea was. Make a cartoon strip showing the sequence of events. आप पहले से उनको एक उन्होंने कहें कि ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था, एंड फिर आप उससे कहें कि चलो आप इसको थोड़ा सा ड्रा कर लो. राइट एंड परफॉर्म a play based on the story, retell the story in your own words, paint a picture of some aspect you like, write a summary report of an event, prepare a flow chart to illustrate the sequence of events. अब इस तरह की बहुत सारी जो है एक्टिविटीज जो है आप उनसे कर सकते हैं which will be at this level. अब ये होता है कि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग उसी को आप यूटिलाइज करके आप किसी प्रॉब्लम पे उसको अप्लाई करेंगे, और उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन जो है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द comprehension and understanding of their knowledge of their cognition जो है उसको बरकरार लाके उस सोल्यूशन के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसको किसी नई सिचुएशन में अप्लाई करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं एट द लेवल 3. डू यू नो अनदर इंस्टेंस वेयर, आप उन्होंने ऑलरेडी एक बयान किया है, नाउ दिस इज सेम इंस्टेंस जो है आप उसको किसी और जगह पे अप्लाई करें. could this have happened, and can you group by characteristics such as what factors would you change if, can you apply the method used to some experience of your own. अब
previous knowledge को वो apply कर रहे हैं to make a new idea and to in a new situation, in a new problem. What sample activities can be done by the students as from the teacher at this level? And examples they are: construct a model to demonstrate how it will work. Make a scrapbook about the areas of studies. Scrapbook mean जो खाली बुक होता है जिसमें आप डिफरेंट स्टिकर्स वगैरह जो है एक सीक्वेंस के साथ या इवेंट्स के लिए जो है बाय इवेंट वाइज जो है आप इस पर फिर डिफरेंट स्टिक नोट लगा लेते हैं. Take a collection of the photographs to demonstrate a particular point. Design a market strategy for your product using a known strategy. अब ये known strategy क्या है? This is the understanding. ठीक? और ये एप्लीकेशन क्या है कि पहले से जो आपको एक किसी ने यूज किया था या आपने उसको एक्सप्लेन कर उसी को आप जो है एक न्यू मार्केट स्ट्रेटेजी बनाए जस्ट लाइक दैट वन. So that will be the application of the previous knowledge, application of the understanding of the previous knowledge into a new situation, and that will be actually called as the applying. अब आते हैं लेवल 4 जो हमारी एनालाइजिंग है, यानी एप्लीकेशन के बाद हम जो है फिर इसको एनालिसिस करेंगे. और इसकी जो एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस दे कैन बी लाइक व्हिच इवेंट्स कुड हैव हैपेंड, हाउ वाज दिस सिमिलर टू, व्हाट वाज द अंडरलाइंग थीम ऑफ. अब इस तरह के क्वेश्चन जो है हम तब करते हैं व्हेन द स्टूडेंट्स दे आर have the basic definition, the basic understanding of some terminologies of some concepts and theories, and they can then also use them, those theories, those understanding and new situation. अब इसमें इन तीनों के होने के बाद हम इसको एनालाइज करते हैं कि इवन जो है ये इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके और फिर एक एक के बारे में उनसे क्वेश्चन करना है, एक एक के डिप के बारे में क्वेश्चन, ये कंपोनेंट ऑफ दैट सेम कांसेप्ट, दैट इज एक्चुअली द एनालाइजिंग. So what do you see as the other possible outcomes? Why did change occur? Can you compare viewer with that presented in? Can you explain what must have happened when and how is this similar to? What are some of the problems of? Can you distinguish between what was some of the motives behind and what are the? अब इसमें अगर आप देखें ना तो this questions that might be about a single component of the whole thing, and this is actually the analyzing कि आप जो हैं पहले as a whole question करें what is, where is, or analyze them, what you know, tell me why, और फिर उसमें थोड़ा सा elaborate करें, फिर इसमें इसको examples के तौर पर कि ये तो सही है, आप उसको दूसरे example ले और फिर इसको जो है इसकी components के बारे में in depth questions जो हैं that will be the analyzing. Some sample activities of this level that can be design a questionnaire to gather information. Of students there should be known to that what is questionnaire, what are the different types of questionnaires, what are the different types of questions, and why we are constructing, why we are just developing a questionnaire, why we are designing a questionnaire. And then if they are known to a questionnaire about a problem, so the similar problem के लिए उनको पता होगा कि भाई what is the different procedure how to design a questionnaire. If they don't know about these two, it means their base is weak, and ऊपर building जो आप build कर रहे हैं, designing कर रहे हैं उससे, तो ये weak होगी. उनको अगर ये नहीं पता कि क्वेश्चंस जो है सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन के टाइप्स क्या होने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चनेयर में या रिसर्च में और ज्यादा बेहतर होते हैं, तो ये सारी चीजें जब उनको पता होगी so they will effectively design a questionnaire. Write a commercial to sell a new product, conduct an investigation to produce information to support a view, make a flow chart to show the critical stages,
construct a graph to illustrate selected information, make a family tree showing relationship, and prepare a report about the year of study. A few general questions हैं. These are just for the example. Later on, we will discuss all these level and along with the medical example कि medical sciences में हम किस तरह जो है different objective बना सकते हैं, different activities और question कर सकते हैं from our students. So this is just for the understanding of the different levels of the cognitive domain. इन तीनों domains में चाहे cognitive है, psychomotor है, and affective में, इसमें हम cognitive domain पर ज़्यादा focus करेंगे और फिर आगे जाके जो है बाकी जो है वो भी हम discuss करेंगे, लेकिन वो इस पर जो है हम example के साथ discuss करेंगे, लेकिन this cognitive domain that will be discussed in detail. क्योंकि अगर ये समझ में आ जाती हैं तो बाकी दो जो है they are quite easy because they are very simple. The political doing, that is just the political doing, and others emotions and other the rules and regulations and the reaction जो feelings है which are being attached and goes parallel with the that psychomotor domain. So the second last, which is the evaluation, which is the judgment, assessment of students of yourself. So you may ask some question and they will decide about the that is good or bad, that is true or false, that is that we can say that it can be good, it can be bad. Like, is there a better solution to judge the value of? Can you defend your position about? Do you think it's a good or a bad thing? It means you are asking some opinion, you are asking some a decision from the students, and they will decide, they will judge, and they will, और ये judgment वो किस बेस पर करेंगे? They will be जो इनकी पिछले 4 levels हैं, यानी उसकी remembering है, understanding है, applying है, analyzing है, इन चारों पर जो इनकी base होगी, so they will be then evaluate their self and they will answer to the questions. Do you think that is a good or bad thing? So इस तरह की आंसर तब दे सकते हैं when they are able to differentiate between the good and bad, and that example जो आप उनको देंगे so उनको ये पता होगा पहले से. How would you have handled? What changes to dash would you recommend? Do you believe in dash? Are you a dash person? How would you feel if, and how effective are? With sample activities regarding this second last subdomain, the evaluation or evaluating. Conduct a debate about an issue of special interest. Make a booklet about 5 rules you see in important. Convince others. Form a panel to discuss views. Learning at school. Write a letter to teach, advising on changes needed at. Write a report and prepare a case to represent your view about. The last, which is the most difficult, the most toughest of all these cognitive level, this is the creative. Can you see a possible solution to? अब तमाम जो है उसकी बरकरार लाते हुए वो एक न्यू जो है solution जो है वो create करेगा. If you had access to our resources, how would you deal with? What would happen if? Can you create new and unusual use for? Can you write a new recipe for a tasty dish? Can you develop a proposal which would? And similarly, simple activities for the same level. Invent a machine to do a specific task. Design a building to house your study. Create a new product. Create a name and plan a marketing campaign. Write about your feelings in relation to. Write a TV show, play puppet show, role play, song, or the pantomime about. Design a record book or magazine cover for, sell an idea, and so on. अब इन सब को जो है हम समराइज करते हैं एक स्टोरी जो है, स्टोरी को एग्जांपल लेते हैं और इस स्टोरी में हम इन चीक को किस तरह जो है क्वेश्चन बना सकते हैं कि इस स्टोरी के एग्जांपल में. So as a final example, let's take a look at step questioning activity in which a series of questions are asked.
Such an activity could be carried out during one simple lesson, and that is, what can you remember about the story? So this is just you are talking about what they know already, just what is in their mind, what is in their cognition, जो उसके cognitive skills जो है उसके आप वो just recall करेगा. So this is just remembering. और फिर वो जो remember वो जो बता देता है, फिर उसको कहते हैं कि आप इसको summarize करें in your own words, यानी वही जो उसके remembering उसको दोबारा से concise करेगा. This is the understanding, वही कहानी. फिर आप उसी कहानी के बारे में उससे क्वेश्चन करते हैं कि सजेस्ट हाउ द मैन लिसन इन दिस स्टोरी कुड हेल्प अदर यंग पीपल. अब ये अप्लाइंग है, यानी उसमें जो उसमें एक लेसन जो है उसमें सीखा होगा, यानी उसको अंडरस्टैंड ऑलरेडी उसकी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है इस कहानी की, तो क्या वो इसको बाकी लोगों के लिए कैसे हेल्प कर सकता है, तो ये उसको अप्लाई करेगा इनटू ए न्यू सिचुएशन. देन उसको थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होगा. सो व्हाई डिड डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी बिहेव द वे दैट दे डिड. अब ये क्या करेगा, इस स्टोरी में एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करके और इसके साथ फिर कंपैरिजन करेगा, कंट्रास्ट में लेके आएगा, डिफरेंशिएशन करेगा इन दोनों में, फिर बताएगा कि ये जो है इस स्टोरी में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है वो जो है डिफरेंट कैटेगरी स्टोरी बिहेव इन द वे दैट, यानी उसके आप वाई का आंसर उससे पूछेंगे तो इसको अलग अलग रखी एक एक को स्टडी करेगा, एक एक को फिर और कंपैरिजन करेगा, फिर इसमें कंट्रास्ट करेगा. तो ये जो है इसको कहते हैं एनालाइजिंग. इवैल्यूएटिंग क्या है, फिर ये उसकी अपनी जो डिसीजन है, उसकी अपनी जो एक ओपिनियन है और उसकी जजमेंट है, आप उनसे पूछेंगे इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन करेक्टर डिसीजन टू लिव. अब हर एक बंदे की, हर एक स्टूडेंट की अपनी जो थिंकिंग है, ये आंसर अलग हो सकता है. यानी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैन करेक्टर है, ये किसी का एक होगा, किसी के दूसरे का और होगा, तीसरे का और होगा. तो देयर मे बी वेरिएशन अबाउट द आंसर्स, एंड these they may all be right because they all are thinking, they all are just answering uh, in accordance to their brain, according to their level. तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो जीनियस होते हैं, might be they have some very good answer, maybe they have some good judgment and a very good decision, but on the other hand जो थोड़ी सी वीक एवरेज है, might be जो है या जिनको थोड़ी सी इंटरेस्ट उस क्लास में नहीं थी, वो कोई इस तरह के क्वेश्चन को फिर वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकेंगे, एंड मे बी जो डिसीजन वो लेंगे दैट वुड बी नॉट राइट डिसीजन. उनकी जजमेंट गलत हो सकती है, उनकी ओपिनियन जो है ये बैड हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, गलत हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है एंड वेरी भी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देन द लास्ट थिंग जो है इन सबको फिर थोड़ी सी क्रिएशन आ जाती है, यानी इसमें कुछ न्यू आइडियाज जो है उसमें आ जाती हैं, एंड लाइक रिराइट द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी इन अ डिफरेंट वे टू शो अ डिफरेंट आउटकम. अब ये जो है उसको उस कहानी को चेंज करो ताकि दूसरा उसको आउटकम, डिफरेंट आउटकम आ जाए. तो ये जो एक एग्जांपल था इन विच वी हैव डिस्कस द डिफरेंट सब डोमेन्स ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, द रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग. अब आ जाते हैं हम इसी लेवल्स को, डिफरेंट कॉग्निटिव डोमेन के लेवल को, ब्लूम्स जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके लेवल को एक मेडिकल एग्जांपल के साथ किस तरह हम हेल्थ साइंसेज में ये डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो है बना सकते हैं. तो पहले जो रिमेम्बरिंग है एंड एग्जांपल हम क्या लेंगे, हमारा मेन मॉड्यूल क्या होगा, दैट विल बी हार्निया. अब हार्निया के रिलेटेड हम जो है, जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि इस तरह की जो डिफरेंट इस सारी एक्टिविटी, सारे क्वेश्चन जो हैं आप एक ही सिंगल लेसन में करेंगे. सही. तो जब सपोज आप हार्निया पर आप कोई टॉपिक, आपका टॉपिक जो है दैट इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ हार्निया, डायग्नोसिस ऑफ हार्निया, तो आप इन सारे डोमेन, जो सारे सब डोमेन को जो है आप डिस्कस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल you are just enter in the class and your topic is just the treatment to hernia. So आप स्टूडेंट से उनको उनकी प्री नॉलेज जो ऑलरेडी जो उनकी नॉलेज है
about the same topic आप उनसे पूछेंगे, right, remember, yeah, memorize, yeah, just tell me the anatomy, the stages, the types, or the treatment approaches of hernias. And might be there would be wrong there, might be the answer would be wrong. और फिर ये आप उनको जब ये ट्रीटमेंट और ये डिफरेंट स्टेजेस और ये सब इनको जब आप टीच करोगे तो एट द एंड उनको फिर जो है दे विल असिस्ट योरसेल्फ कि हम कहाँ पर थे और हमारा आंसर गलत था या ठीक था। तो इससे उसकी क्लास की एनवायरनमेंट जो है थोड़ी सी हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाती है। तो सिमिलर हार्निया की एग्जांपल का अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन किस तरह आएगा, अब यही स्टेज टाइप सब तो उसको मेमोराइज कर दिए, अब उसमें थोड़ी सी एलाबोरेशन की कंपोनेंट हम डालेंगे कि अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन, एलाबोरेट द pathophysiology, the etiology, the predisposing factor, mean which going to cause that hernia, complications, why we and which instance that the patient would receive this treatment, and what are the indication of the different treatment options for the hernias. Now, इसी नॉलेज को यूज करके, इसी अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रहेंशन को यूज करके वो एक न्यू सिचुएशन पे उसको करेंगे एंड पहले उसकी जितनी भी हर्निया की पेशेंट उसने डायग्नोस की होंगी, इससे पिछली जो है उस कितनी जो है मेडिकल डॉक्टर ने या जो है उसको या उसकी जो बुकिश नॉलेज है अबाउट द डिफरेंट रिपेयर ऑफ अनदर हर्निया, अब ये एक न्यू केस है, एक न्यू हर्निया केस है, सेम नॉलेज सेम अंडरस्टैंडिंग he or she will just utilize here. So किस तरह हम कर सकते हैं कि apply the previous knowledge and understanding to diagnose, to repair or to prevent the complication of hernias. या इस तरह भी हो सकते हैं कि उनकी जो simple hernia था without the complication, now there is a hernia with the complication, so how you will deal with. So that will be the application of the previous knowledge and experience and the memorization in this new case. सेम एग्जांपल का लेवल 4 किस तरह हो जाएगा, एनालाइज द डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ इमेजिंग। आप वहां पर जो ऑलरेडी इमेजिंग हो चुकी है उसको आप अलग अलग करोगे, सही, कि जो यहाँ पर एमआरआई है, दिस इज द सीटी स्कैन, दिस इज एक्सरे, which one is better, which one is reliable, which one is valid, features क्या क्या हैं। तो it mean analyze में हम बार क्या करते हैं, break down of all the component into single pieces, और फिर evaluation में हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से combine करते हैं। So analyze the diagnostic value of imaging. Diagnostic value जो हैं ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हो सकते हैं, like we can say that sensitivity हो सकती है, specificity हो सकती है, और द पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हो सकती हैं, द नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हो सकती हैं, द लाइक्लीहुड रेशियो पॉजिटिव, द नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो हो सकती हैं, द डायग्नोस्टिक इंडेक्स हो सकता है। ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स है जो हम किसी भी इमेजिंग जो है उसको कर सकते हैं कि ये बेहतर इमेजिंग है या बेहतर नहीं है। सो डिफरेंट रिपेयर अप्रोचेस, अब डिफरेंट रिपेयर अप्रोचेस मीन कि आपने 1 2 3 4 दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस, उसको आप अलग अलग कंपोनेंट करें और फिर इसके दरमियान कंपैरिजन करें, कॉस्टली कौन सा है, लेस कॉस्टली कौन सा है, कॉम्प्लिकेशन किसकी ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन किसकी ज्यादा नहीं है, कौन से उसमें ज्यादा आउटकम अच्छे आते हैं, कौन से में आउटकम कम आते हैं, इनविजिव जो है कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा। the recurrence in specific patient groups using the literature. फिर evaluation क्या हो जाएगा, that will be the assessment and judgment, evaluate the alternative hernia treatment option and complex situations such as in patient with SITs, approaches for the unexpected findings such as the malignancies. Then आप इस तरह यहाँ पर देखिए तो इसमें यहाँ पर हर्निया के साथ साथ एक पेशेंट है जिसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग आ जाती है, जैसे कोई न्यूप्लाज्म ट्यूमर आ जाती है। अब क्या करेंगे, ये डिसीजन लेंगे नाउ व्हाट we can do in this new situation because this is totally new of the previous one. So they will just decide and they will just the decision taken will be based on the previous levels.
अब अगर उसकी प्रीवियस लेवल्स बेस जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ इवैल्यूएशन में जो इनकी डिसीजन होगी, उनकी जो ओपिनियन होगी, उनकी जो जजमेंट होगी, that would be also weak and that might be wrong. So that's why this level जितनी भी हैं, ये सारे लेवल जो हैं, पहले जितना पहला लेवल है वो स्ट्रांग होगा, और जब तक वो स्ट्रांग नहीं है, स्टूडेंट शुड नॉट एंटर इनटू द सेकंड लेवल। और इसी तरह जो एंड जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इसलिए ब्लूम ने इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया कि दिस इज अ मास्टरी लर्निंग, उसको कहा गया कि इसमें आपने खुद को एक लेवल पर मास्टर करना है स्टूडेंट को, तब जाके जो है अब दूसरे अगर लेवल नीचे लेवल जो स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट, ऊपर बिल्डिंग जो वो भी स्ट्रांग नहीं होगा। अब क्या आ जाता है, इवैल्यूएशन जब इस तरह की वो डिसीजन ले लेता है, फिर उसी इवैल्यूएशन ए डिसीजन एंड जजमेंट एंड ओपिनियन के बेस पर वो एक न्यू ट्रीटमेंट अप्रोच क्रिएट करेंगे, which would be in the new situation like in this case. So create a new approach to repair hernias, modify the mesh application placement, or handle the unusual situation like the in malignancies. So that was a new situation, unexpected situation, a rare and unique and atypical situation. Now when जब वो डिसीजन ले लेते हैं तो उसके लिए वो कुछ नया करेंगे, दैट नया मीन दैट इज द ग्रेट। अब एक बंदा एक्सपर्ट होगा तब वो जाके कॉम्प्लिकेटेड केसेस का, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सर्जन का एग्जांपल ले लेते हैं, एक नोवाइस सर्जन है तो कॉम्प्लेक्स केस जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए बिकॉज उसकी अभी लर्निंग लेवल जो है उस लेवल तक नहीं गई है कि वो एक न्यू कॉम्प्लेक्स केस में अपनी डिसीजन ले, इवैल्यूएट करे और फिर इसको क्रिएट करे। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी हो और एक senior surgeon है, so he or she can do easily if there is a lot of complication within that patient, if there are a lot of secondary other conditions along with that primary जिसके लिए सर्जरी होनी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को इस तरह आपने बेस से लेके जाना है कि जो आप टॉपिक जो लेसन आपका होगा, the detail and the background of that topic that should be clear to all the students of that class. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये दिस इज जस्ट द समरी ऑफ ऑल द 6 सब डोमेन्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, दिस इज अनदर एग्जांपल एंड नाउ अब अगर आप उसको समझ आ गई होगी प्रीवियस हर्निया की, तो ये उसकी तरह है और ये और भी आपकी कंसेप्ट जो है क्लियर करने की इंशाल्लाह हम इससे क्लियर हो जाएगी। So there is another condition, the topic is the subcutaneous abscess. अब how we can make the first, the initial subdomain, that is the remember are just still, and what is the definition of the subcutaneous abscess, what we mean by the subcutaneous, what is abscess, what is the clinical criteria of the subcutaneous abscess, and that what is an abscess, what are different types of abscess, and what does it mean. So आप इसकी comprehension यानी understanding किस तरह सकती हैं कि what is the etiology and what are the different factors which can cause the subcutaneous abscess, what is the pathophysiology, what is the mechanism of this disease, evaluation and clinical presentation of an abscess, how we can apply these knowledge, SAM, diagnose, confirm, are the proposed management of an abscess. अब इसको वही जो ब्रेक डाउन वाला कंपोनेंट है कि आप जो है इसी के लिए डिफरेंट इमेजेस जो है उस पर डिसीजन करें विच वन इज द बेस्ट, इसके लिए डिफरेंट स्पेशल टेस्ट जो है उस पर डिसीजन लें, कौन सा टेस्ट बेहतर रहेगा, कौन सा टेस्ट जो है ये नेसेसरी है, इसके लिए ट्रीटमेंट अप्रोचेस को आप इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और फिर डिसाइड करें कि विच ट्रीटमेंट इज द बेस्ट फॉर द दिस। और इसमें थोड़े से जो है क्रिटिकल अप्रेजल भी आ जाती है, और क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब ये है कि आप क्रिटिकल अप्रेजल तब कर सकते हैं व्हेन यू जस्ट break down a whole into its components and then compare the different components with each other.
आप उससे एक नतीजा हासिल करते हैं और उस नतीजे और उस कंपैरिजन के बेस पर फिर आप एक डिसीजन लेते हैं एंड दैट डिसीजन इज देन द इवैल्यूएशन. Evaluate the validity and reliability of the information used to diagnose abscess in various setting. अब इससे पहले जो हमने एनालाइज में किया कि आपने ऑलरेडी डायग्नोस्टिक वीडियो ऑफ इमेजिंग को पता चल जाएगा. जब आपको पता चलेगा कि भाई इसकी डायग्नोस्टिक इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, ऑब्वियसली दैट टेस्ट इज मच मोर बेटर जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है. सपोज इफ देयर इज अ टेस्ट, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, व्हेन देयर इज ACL रप्चर हो जाती है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ द नी, सो वहां पर 2-3 टेस्ट की जाती हैं, जैसे इंटीरियर ड्रा टेस्ट है या लेगमेंट टेस्ट है. बट द लेगमेंट टेस्ट इज मोर सेंसिटिव. इट मीन इसमें जो है ज्यादा जो है पेशेंट सही रिजल्ट्स आएंगे एंड मोर पॉजिटिव केस आएंगे. एंड इसी तरह जो है इसकी अगर आपको ऑलरेडी उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू का पता है, तो इस लेवल पर इस इवैल्यूएशन पे आप एक डिसीजन लें कि यस आई हैव टू conduct that test on the patient because इसकी sensitivity ज़्यादा है. So evaluate the validity and reliability of the information knowledge used to diagnose abscesses and various settings such as the diabetic or the immunocompromised patients. वैलिडिटी reliability इंशाल्लाह ये हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि वैलिडिटी मीन कि जिस पर्पस के लिए हम कर रहे थे क्या वाकई उस पर्पस के लिए है कि नहीं है. एंड reliability when a test when a scale that give the same result again and again when it is used by a single person at different time, yeah, when it is used by different person in a same time. तो दोनों जगहों पे ये reliability इसको फिर आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. So that is was the evaluation, and then how we can example of the create for this subcutaneous sepsis. We create new knowledge as in finding early diagnostic test, less invasive treatment approaches, or alternative tools for the intervention for the subcutaneous sepsis. We can take another example which is the spondylolisthesis. अब पहला क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट से कि actually it is made up two words, spondylolisthesis, and anyone from the class just who can tell me that what is the meaning of these two words, spondylo and listhesis? What is the definition of spondylolisthesis? In which condition, in which case we can call that the patient is suffering from the spondylolisthesis? What are the different types of spondylolisthesis? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं that might be not your topic, but you can just ask these questions just to make a link and just to आपको जो है जज कर सके कि स्टूडेंट्स को पहले से कितना पता है. आप अगर वो आंसर दे रहते हैं कि and about that, so there is no need of just recalling the anatomy, recalling the different types and recalling the criteria as well as the definition of the spondylolisthesis. अंडरस्टैंडिंग में वही कि आप इस स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की काज पर बात करें और मैकेनिज्म के साथ के काज को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह जो है ये फैक्टर जो है दे कैन लीड टुवर्ड द स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस. उसमें वो सपोज बायोमेकेनिकली एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन देयर इज दैट फैक्टर, व्हाट आर द चेंजेस that will be bring in that patient biomechanics, और उसके बाद जो क्यों इस तरह spondylolisthesis हो जाएगा. So that will be the pathophysiology. Evaluation in the clinical presentation of the spondylolisthesis. Applied knowledge to diagnose, confirm, and propose management for the spondylolisthesis. Then that will be analyzed. Just again same discussing dividing, comparing, contrasting, differentiating the different images, which one is good, which one is better, which one is fit for this condition. And then evaluation mean decision taking, judgment, and that is the opinion from the students. And last, just the less invasive treatment, less costly treatment, the best treatment, the one which having the good outcomes for the spondylolisthesis. That would be physical therapy can work, or no, they will be need of surgery, or simply the pharmaceutical treatment जो है, the medication जो है, drugs, that will be enough for this patient.
So this is, again, we can call it the C1, C2, C3, and this is our psychomotor domain, which will be discussed in the next lecture, inshallah, which is also known as the Simpson taxonomy, like cognitive domain that was called as the Bloom taxonomy. The reason is that because that was proposed by the Benjamin Bloom in 1956, and after almost 14 or 16 years in the early years of the 1970s, I think that was 1972, when the Sampson that proposed the new domain, which is the psychomotor domain, and that's why it is known as the Simpson taxonomy or the psychomotor domain. So that was enough for today, and we will just then discuss the psychomotor domain in the next lecture. Thank you so much to all of you.